So, hi, welcome to the last session of this series, integration, indefinite integration, rather standard forms and theorems with proofs. So, this is the seventh class, and this is the last class of this series. So, we are in this series. We are studying about standard forms, uske proof, theorems, uske proof, right? So as I've been telling you, this series will give you minimum 4 marks and maximum 7 marks you can score out of this series. Okay, now लास्ट के तीन जो स्टैंडर्ड फॉर्म्स बचे हुए हैं दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस एंड देन टुवर्ड्स द एंड सम अदर फ्यू important things. All right, chalo now let me share with you the screen. All right. So just to revise something, uh, तीन तीन के तीन सेट कर रहे हैं हम लोग, right? The first set is 1 upon x square plus a square. The integration is 1 upon a tan inverse x upon a plus c. Second, of course, this was second method, but second from this set was 1 upon x square minus a square, 1 upon 2a log of x minus a upon x plus a plus c. इसका proof हमने किया था. Then we did this 1 upon a square minus x square is 1 upon 2 a log of a plus x upon a minus x plus c. This was the first set of three standard forms. Then it was the second set 1 upon root of a square minus x square, and the integration is sine inverse of x upon a. Then it was 1 upon root of x square minus a square log of x plus root of x square minus a square plus c. The third one is root of 1 upon root of x square plus a square, and the answer is log of x plus root of x square plus a square plus c. And this was additional in this part. Now we are going to towards the third set. The third set is the integration of directly root of a square minus x square, right? Now whenever this type of problem is there, we take the other term as a x, sorry, 1, right? जिसका कोई नहीं होता है उसका 1 होता है. Just like in by parts, in the last class we studied about integration by parts. इसका proof हमने किया था. Alright, now इसमें हमने देखा था u and v selection is also very important. So there are few questions जहाँ पे आपको है ना ये नहीं होता है, like for example u and v selection का possibility नहीं होता. There is only one terms. Like for example, during the problems you must have done log x का integration. Log x का integration कैसे करेंगे? Log x into 1. Sin inverse x का integration करना है, sin inverse x into 1. Then cos inverse x into 1. Then tan inverse x and everything like sin inverse x, tan inverse. So inverse function के लिए 1 as a second term consider करते हैं. Now very important thing here, u is equal to root of a square minus x square and v is equal to 1. While doing by parts, the selection of v is very important. I understand that अपने को textbook में बोला है लिए टी लेने को, but here both the functions are algebraic function. तो u क्या है, v क्या है? The function यहाँ पे v का सिलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ये देखो यहाँ पे है ना इंटीग्रेशन ऑफ v लेना है. Although it is not mentioned in the textbook, I will repetitively say that integration v का है तो v का सिलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है. अपने को टेक्स्ट बुक में पता है u का सिलेक्शन, बट आई एम टेलिंग यू v का सिलेक्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, बिकॉज डेरिवेटिव किसी का भी निकाल सकते हैं. इंटीग्रेशन ऑफ नॉट ऑल फंक्शंस इज अवेलेबल, right? So what is v? V is a function which is easily integrable, easily and orally integrable. So here 1 लिया है, and integration of uv dx is equal to u integration v dx minus integration v dx into derivative of u dx. Now students keep on asking me, sir ये फॉर्मूला लिखना जरूरी है क्या हर बार?
I suggest write down the formula for two reasons. Number one, एक जितनी बार आप लिखोगे उतना रिपीट करते रहोगे तो अपने आप ये बाय हार्ट हो जाएगा, तो अपने को अलग से बाय हार्ट करने की ज़रूरत नहीं. अनदर थिंग, एटलीस्ट यू हैव सम फार्मूला. अपना तो आदत है कुछ ना कुछ सिली मिस्टेक करने का, सो एटलीस्ट बाय एनी चांस अपना दिन बुरा चल रहा है एंड फॉर द सेम डे यू आर मेकिंग सम मिस्टेक, एटलीस्ट यू हैव रिटन द फार्मूला. सो द एग्जामिनर विल अंडरस्टैंड कि आपको फार्मूला आता है तो आपने कुछ सिली मिस्टेक किया है. Okay, now I is equal to u, that is root of a square minus x square, integration of 1 dx. Okay, integration of 1 dx is x minus integration of 1 dx into derivative of root of a square minus x square and the whole dx. Now, interesting part. Integration of 1 is x into root of a square minus x square. Minus, once again, integration of this is x. Okay. Now, यहाँ पे देखो डेरिवेटिव ऑफ रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर. हमने डेरिवेटिव्स में सीखा था रूट एक्स का डेरिवेटिव होता है 1/2 रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर. नॉट ओनली दैट, रूट में x के बदले रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है, तो यू हैव टू टेक द डेरिवेटिव ऑफ रूट ऑफ डेरिवेटिव ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर. आई रिपीट, रूट ऑफ x का डेरिवेटिव होता है 1/2 रूट x. नाउ x के बदले यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है, सो कंपोजिट फंक्शन के रूल के हिसाब से ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव लेना बहुत जरूरी है. ए स्क्वायर विच इज अ कांस्टेंट टर्म जिसका डेरिवेटिव 0 है, एक्स स्क्वायर जिसका डेरिवेटिव 2x है, तो यहाँ पे मुझे मिलेगा 2 इंटू एक्स, लेकिन माइनस है. ना यहाँ पे 2 and 2 gets cancelled. Okay, so I have x root of a square minus x square माइनस, यहाँ पे देखो, यहाँ पे x इंटू ये x स्क्वायर बनेगा लेकिन माइनस एक्स स्क्वायर बनेगा, डिवाइडेड बाय रूट ऑफ a square minus x square. Now the problem becomes easy now because यहाँ पे अभी एडजस्टमेंट करना है. रूट ऑफ a square minus x square माइनस, यहाँ पे this is very important, I am adding a square minus x square. So I have added a square, so I am supposed to subtract a square in the numerator. This adjustment is very important to solve the problem further. Now this is a square minus x square dx. All right, now have a look at this. यहाँ पे x into root of a square minus x square, इसको थोड़ा सेपरेट करने की कोशिश करते हैं. सेपरेट करते हैं, then the first part is a square minus x square upon root of a square minus x square dx minus integration of a square upon root of a square minus x square dx. All right, now यहाँ पे x root of a square minus x square. Now understand this part. That is a square minus root of a square minus x square. Right? A square minus x square divided by root of a square minus x square. अब हम पहले से सीखते आ रहे हैं b upon root b is actually रूट बी डायरेक्टली लिख सकते हैं. जिसको नहीं समझ में आ गया रूट बी कहाँ से आया, तो एटलीस्ट ये तो समझ में आएगा कि बी की वैल्यू जो है न्यूमरेटर में, दैट कैन बी रिटन एज रूट बी इंटू रूट बी. अगेन बी कैन बी रिटन एज रूट बी इंटू रूट बी एंड डिवाइड बाई रूट बी जो है, इफ दिस गेट्स कैंसल
so root b, so b upon root b होता है, then it is equal to root b. Similarly यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आ गया, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx minus a square as a constant term I am taking outside, 1 upon root of a square minus x square dx. Okay, now let's open the bracket, x root of a square minus x square minus integration of root of a square minus x square dx. माइनस ऑफ माइनस यहाँ पे ब्रैकेट ओपन करें तो ये भी बन गया प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर. ओके, नाउ प्रॉब्लम एक इंटरेस्टिंग मोड पे आ गया. नाउ दिस इज आई इज इक्वल टू एक्स रूट ऑफ a square minus x square. Okay, if you observe this part, okay, and if you observe हमने स्टार्ट कहाँ से किया था, कैन यू सी, हमने स्टार्ट यही से किया था, रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर. ओके, हमने स्टार्ट यही से किया था, रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, एंड अगेन मेरे पास यहाँ पे रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन है. सो दिस इज कॉल्ड एज रिपीटेटिव इंटीग्रेशन. इंटीग्रेशन रिपीट हो रहा है बार बार, right? So I cannot go on doing बार बार वही आते रहेगा. So instead of doing it again, I'm writing it as I plus a square. इसकी क्या बात है, 1 upon root of a square minus x square. In the last to last class हमने देखा था 1 upon root of a square minus x square का इंटीग्रेशन है sin inverse x upon a plus c. Alright, now यहाँ पे I will write the integration sin inverse x upon a, right? Now plus c1 लिखो या ये बाद में लिख देते हैं, अभी लिखने की जरूरत नहीं. Towards the end we can do this. Now I on the left hand side, let us take this I on the left hand side, it becomes plus I is 2i x root a square minus x square plus a square into sin inverse x upon a. Hence I is equal to, final step, 2 gets cross multiplied, x upon 2 root of a square minus x square plus a square sin inverse x upon a plus c. Finally, what do we get? Standard form, last standard form of root of a square minus x square. राइट, जैसे मैं बोल रहा हूँ, ट्राई टू रिपीट वर्बली, ओरली रिपीट करते रहो, तभी वो बाय हार्ट हो जाता है. सिर्फ लिखना नहीं है, लिखते लिखते x अपॉन 2 रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2 क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया, ए स्क्वायर अपॉन 2 साइन इनवर्स x अपॉन a प्लस c. राइट, सो हियर इज द लास्ट सेक्शन का फर्स्ट स्टैंडर्ड फॉर्म, that is root of a square minus x square. All right, now let's move on to the next part. Okay, now the second one that of this part is let I equal to, अगर आपको पहला वाला समझ में आ गया तो सेकेंड एंड थर्ड becomes very easy सॉल्व करने के लिए. Actually, we are going to solve for root of x square plus a square into 1, जिसका कोई नहीं है इंटीग्रेशन में, उसका 1 होता है. ओके, सो वंस अगेन एज आई टोल्ड यू अर्लियर, सर ये बोरिंग पार्ट है, वापस लिखना. यस, आई नो इट इज बोरिंग, बट कीप ऑन राइटिंग बिकॉज दैट्स द वे यू प्रैक्टिस फॉर योर सेल्फ, एंड this will pay off you in the final exam. So here
sorry, is equal to u integration v dx minus integration of integration v dx into derivative of u dx. All right. Now, let's start with the problem. I is equal to u, that is x square plus a square, integration of 1, that is v dx, minus integration of 1 dx, derivative of root of x square plus a square, एंड इसका पूरा वापस इंटीग्रेशन होगा. ना आई इज इक्वल टू 1 का इंटीग्रेशन x है, सो इंटीग्रेशन x root of x square plus a square minus, again once again, integration of 1 is x. Now this is interesting, root of x square plus a square, root x का डेरिवेटिव होता है 1 upon 2 रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है, सो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर हो जाएगा. एक्स के बदले इफ देर इज एनीथिंग देन इट बिकम्स अ कंपोजिट फंक्शन. बाय चेन रूल दिस बिकम्स एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का डेरिवेटिव, दैट इज एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, ए स्क्वायर इज अ कांस्टेंट टर्म, डेरिवेटिव 0 होता है dx. For few people this may be boring जो मैं बात कर रहा हूँ, but it is required. बार बार अपने आप से रिपीट करो. This makes your life simple because आप easily इसको प्रैक्टिस कर सकते हो, राइट? और ये अच्छे से याद रहेगा आपको. So not only write but also repeat verbally. Now look at this, x into x is integration x square upon root of x square plus a square. So now this is just like what we have done in the previous case. Now I is equal to, एडजस्टमेंट जरूरी है, एडजस्टमेंट के लिए इसमें कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस यहाँ पे एडजस्टमेंट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर. कुछ नहीं करना है, मैंने ए स्क्वायर ऐड किया, ए स्क्वायर सब्ट्रैक्ट किया. किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए अगर मैं ऐड भी कर रहा हूँ और सब्ट्रैक्ट भी कर रहा हूँ, राइट? ओनली इफ मी जस्ट add it and forget, then there is a problem. मैंने ऐड भी किया है, सब्ट्रैक्ट भी किया है, वैल्यू रिमेन्स द सेम. नाउ i इज इक्वल टू यहाँ पे x रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, मैं थोड़ा स्लो करूंगा अभी, माइनस इसको सेपरेट करते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ ए स्क्वायर अपॉन रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर dx, bracket close. Now I is equal to x root of x square plus a square minus, now remember in the previous problem हमने किया था b upon root b, यहाँ पे मैंने बताया था b upon root b is root b, right? Similarly x square plus a square divided by root of x square plus a square is under root x square plus a square dx minus a square as a constant term बाहर ले लो, 1 upon root of x square plus a square dx. Okay, now I'll open the bracket, x root x square plus a square minus integration of x square plus a square dx माइनस ए स्क्वायर. नाउ सॉरी माइनस नहीं है यहाँ पे माइनस है, तो ये तो माइनस बन गया, ये तो बनेगा माइनस एंड माइनस प्लस, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर dx. अब कुछ समझ में आ रहा है? क्वेश्चंस का सॉल्यूशन, ये जो तीनों स्टैंडर्ड फॉर्म है, सॉल्व करने का तरीका सेम ही रहेगा. नाउ इसको देखो, ये क्या है? Look at this. What about this?
ये क्या है, यही है, वापस आ गए वहां पे, माइनस आई रिपीट हो रहा है इंटीग्रेशन, प्लस ए स्क्वायर, इसका क्या करे, इसका हमने देखिए लास्ट पार्ट में क्या किया था, रूट ऑफ एक्स, 1/√x² प्लस ए स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन क्या है, लॉग ऑफ एक्स प्लस रूट ऑफ x² प्लस ए स्क्वायर प्लस सी, राइट. सो कमिंग बैक टू द प्रॉब्लम, नाउ यहाँ पे दिस विल बी log of x plus root of x² plus a square. जस्ट मैं थोड़ा यहाँ ले लेता हूँ so that it will be easy for you. Okay, now that means 2i, या i लेफ्ट हैंड साइड में आ गया, that minus becomes plus, is equal to x root of x² plus a square plus a square log of x plus root of x² plus a square. That means I का जो वैल्यू है that becomes x/2 अंडर रूट x² plus a square plus a² 2 log of x plus root of x² plus a square plus c. This becomes the second standard form of this set, right? So, oh, okay, I'll write it again, please. This is root of x² plus a square dx is equal to x/2 under root x² plus a square plus a² 2 log of x plus x² plus a square plus c. Okay, now this is the second standard form of the set. आते हैं अभी स्टार्ट करते हैं थर्ड वन, राइट. सो व्हाट वी हैव डन, फर्स्ट वन अभी हमने किया था, फर्स्ट वन का था integration of root of a square minus x square, that is equal to x/2 root of a square minus x square plus a²/2 sin inverse of x by a plus c. The second one, integration of root of x square plus a square dx is x/2 root of x square plus a square plus a²/2 log of x plus root of x square plus a square. The third one is naturally एक ही बचा है अभी, the last one of this series जो मैंने स्टार्ट किया था, that is root of x² minus a square. एज यूजुअल अगर पहले वाले दो समझ में आ गए तो इसको क्या करना है, जिसका कोई नहीं है उसका 1 है इंटीग्रेशन में. ऑल राइट, हियर u is equal to root of x² minus a square, v is equal to 1. Okay, therefore integration of uv dx, इसका फॉर्मूला क्या है, u इंटीग्रेशन v dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ इंटीग्रेशन v dx into derivative of u dx. रिमेंबर, रिपीट करते रहो. आई नो you might feel it boring, repeat करते रहो. That is the easiest way to by heart the formulas, right? Now I problems चालू हो गया यहाँ पे, root of x² minus a square इंटीग्रेशन 1 dx, u इंटीग्रेशन v हो गया, यहाँ पे इंटीग्रेशन v dx मतलब क्या है, 1 dx है, into derivative of root of x² minus a square dx. All right, now I is equal to x इंटीग्रेशन ऑफ 1 क्या है, x है, तो x रूट ऑफ x² minus a square
माइनस फिर से इंटीग्रेशन ऑफ एक्स, वन क्या हो गया एक्स, right? Derivative of root of x square minus a square. Derivative of root x is 1 upon 2 root x, but x नहीं था, यहाँ पे क्या था x square minus a square. Now इसका मतलब मुझे x square minus a square का डेरिवेटिव लेना ज़रूरी है. x square का डेरिवेटिव है 2x और a square का डेरिवेटिव है 0 which is a constant term, right? Now ये हो गया कैंसिल, 2 हो गया कैंसिल. अब देखते हैं दैट I is x root of x square minus a square minus x into x is x square upon root of x square minus a square dx. बार बार वही तीनों में कर रहे, कुछ नया नहीं हो रहा है. सो अंडरस्टैंड दिस, राइट? आपको सिर्फ प्रैक्टिस अच्छे से करना है. क्या करना है अभी इधर, x रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस, ओके, एडजस्टमेंट एक्स स्क्वायर. अब यहाँ पे मैं पहले माइनस करूंगा एंड फिर प्लस करूंगा ए स्क्वायर को, राइट? लुक एट द प्रीवियस वन. यहाँ पे हमने क्या किया था, पहले प्लस ए स्क्वायर किया था. लुक एट दिस पार्ट एंड देन माइनस ए स्क्वायर किया था, राइट? नाउ डिवाइडेड बाय, डिपेंडिंग अपॉन द प्रॉब्लम एडजस्टमेंट्स आपको करना है. एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, सॉरी, सेपरेशन करते हैं. आई इज इक्वल टू एक्स रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस ब्रैकेट, सेपरेशन करते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस इंटीग्रेशन ऑफ, प्लस है हाँ, यहाँ पे ध्यान देना, पिछले वाले दो प्रॉब्लम में इधर माइनस था. एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर dx ब्रैकेट क्लोज. इसको यहाँ पे शुरुआत करते हैं वापस. ओके, ना आई इज इक्वल टू एक्स रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, दिख रहा है आपको, माइनस यहाँ पे b अपॉन रूट बी होता है, तो यहाँ पे आएगा रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर dx. और याद रखना यहाँ पे प्लस है, देखो यहाँ पे, राइट, देयर इज अ प्लस एंड ए स्क्वायर कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, ए स्क्वायर कांस्टेंट बाहर आ जाएगा. इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर dx. ब्रैकेट ओपन करते हैं, बाहर माइनस साइन है, तो आई इज इक्वल टू एक्स रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस इंटीग्रेशन ऑफ रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर dx माइनस ए स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर dx. ऑलराइट, नाउ इसका क्या करेंगे, देखो अभी इधर फॉर दिस फर्स्ट पार्ट ओके सेम, सेकेंड पार्ट इज समथिंग इज आई अगेन, वंस अगेन देखो यहाँ पे दिख रहा है आपको, कैन यू सी दिस, ओके, आई आ गया वापस. व्हाट अबाउट दिस, द थर्ड पार्ट, द लास्ट पार्ट, यू कैन सी हियर, हमने यहाँ पे इंटीग्रेशन किया था. What is the integration of 1 upon root of x square minus a square? The answer is log of x plus root of x square minus a square. So once again, here what I'll get is plus a square log of, oh I'm so sorry, it is not plus, huh? यहाँ पे पहली बार माइनस आ रहा है, x plus root of x square minus a square. Now, I on the left hand side, it becomes 2i. Okay, now root of x root of
x square minus a square minus a square log of x plus root of x square minus a square. So I का जो वैल्यू है that becomes x upon 2 x square minus a square minus a square upon 2 log of x plus root of x square minus a square प्लस सी. रिमेंबर इसको आपको प्रैक्टिस करना है वीडियो पॉज करके, बिकॉज आपको अगर पहला वाला समझ में आ गया तो सेकंड एंड थर्ड आपको खुद को ट्राई कर लेना चाहिए. ओके, नाउ दैट मीन्स इंटीग्रेशन ऑफ रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर dx, बार बार बोलते रहो, दैट इज द ओनली वे टू रिमेंबर द फॉर्मूला. लिखो बोलो, लिखो बोलो, लिखते वक्त बोलते रहो. माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2 लॉग ऑफ x plus root of x square minus a square plus c. Now that is the end of all the standard forms. So in the previous class मैंने end किया था theorems का, और अब ये है, this is the last standard form. Okay, so today we discussed 3 standard forms. First one was root of a square minus x square is x by 2 root of a square minus x square plus a square upon 2 sine inverse x by a. Second, root of x square plus a square, it is x by 2 root of x square plus a square plus a square upon 2 log of x plus root of x square plus a square. The third and the last, यहाँ पे बीच में माइनस साइन आएगा, that is integration of root of x square minus a square is x upon 2 root of x square minus a square minus a square upon 2 log of x plus root of x square minus a square plus c. All right, so this is the end of the series of standard forms and theorems with the proofs, right? I'll be taking one more class after this. That will be, we will be discussing all the standard forms एक जगह लेके आते हैं, so that it will be helpful for you every time you want to revise. एक ही जगह पे सारे standard forms आ जाएंगे, आपको बार बार रिवाइज करने, बार बार लिखो बोलो till the time पूरे इधर fit हो जाए. All right, and then there will be one more class जहाँ पे हम लोग derivatives and integration compare करेंगे, because that's where students get confused. sin x का derivative और sin x का integration, इसमें confusion होता है. So I'll be comparing the formula. So there will be 2 more classes, but it will be taken separately, not under this series. Okay, thank you very much. But remember, in case in आपको अगर कुछ इसमें प्रैक्टिस करना है, सो द प्रैक्टिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. इसको आप कम से कम, मैं बार बार रिपीट करो, दिस इज गोइंग टू गिव यू 4 मार्क्स कम से कम एंड 7 मार्क्स मैक्सिमम, राइट? अपार्ट फ्रॉम दैट, इफ यू हैव एनी डाउट, you can send your doubt on WhatsApp on this number. This is my office number, and once I get the query, I'll get back to you, right? So in case if you have any doubt in mathematics, in case if you have any doubts in integration, in case if you need any help about career counseling, please feel free to connect on this number. Also, in case if you want any help in abroad education, if you are interested in going abroad, please feel free to connect with me on this number. Thank you very much. Thank you for the support.